It is with great pleasure that I, Dr. Ritu Jain, EB member of UP Adolescent Health Academy, welcome you all to the next in series of our popular parenting talk series organized by UP Adolescent Health Academy in association with Central Adolescent Health Academy and Academy of Pediatrics, UP, with immense support from Central Academy of Pediatrics. The topic for tonight's show is Trapped Behind Screen and Substances, Safeguarding Adolescents in a Changing World. As parents of adolescents, we are aware of unseen threats of cyberbullying, the unsafe online spaces, and the rising substance abuse amongst school children. It is like a silent war out there. And though we can just speculate on the India-Pakistan war, fortunately, in this particular war, we have with us tonight a very distinguished panel of experts in talk with our very eminent host, Dr. Ruchira Gupta, to discuss how to recognize digital red flags, how to safeguard against cyberbullying, and how to address substance abuse with empathy and awareness. It gives me immense pleasure to extend a warm and cordial welcome to Dr. Vasant Kalatkar, National President of Central IIP 2025. It is indeed an honor to have you as our chief guest tonight and invite you, sir, to share your thoughts on the topic. Dr. Vasant, sir. Good evening, all. Sir, Yeah, I bring greetings from Indian Academy of Pediatrics. Today it's our President Dr. Himabindu Singh, Chairperson-elect Dr. Sushma Desai, immediate past President, past Chairperson Dr. Geeta Patil, Dr. Arya, Honorary Secretary, Treasurer Dr. Shelu Gadkar, guest of honor Dr. Rimjim, who is from our neighboring state, and talk show host, Joint Secretary Dr. Ruchira Gupta. You all know about Ruchira Gupta, her vibrancy, how she works in a serious way. And whenever Ruchira decides that the given task to do, that she does it. That's specially. Thank you, Ritu. The best of the best, and Ritu is always after us. That. And today's our all member, Dr. D.M. Gupta, Dr. Devendra Bhagwani, Dr. Piali, Dr. Ritu Gupta, Dr. Rajiv Krishak. Rajiv Krishak के बारे में भी बहुत ज़्यादा मैं बोल सकता because he had organized that neuropedic in such a good way that you can't say anything. Flawless conference, excellent conference, and really I want to say thank you our today's expert, mainly Dr. Hariom Gandhi and Dr. Rita Yadav. Really, this is the need of today to control everything. And thank you, Dr. Rita Yadav, that is the inspector at Cyber Crime Police, Agra. It's really, there is always a need for a public whenever there is any cyber crime, cyber bullying. Whenever we go to these people, they are really helpful. They help in such a way. It's a totally different experience for cybercrime cell and general police station. I think there is a lot of load in general police station and general police and as compared to your. But really, hats off to you people and thank you. Because of you people, we can prevent so many. And Dr. Gandhi and Dr. Mr. Rita Yadav, I want to say IIP is also doing a lot for this. We have produced one film, Disha. That Disha is to how to prevent substance abuse and drug abuse, conceptualized by me, but every help by this Adolescents Health Academy. Every help. The story writing was done by one of few of our members of Adolescents Health Academy, that is on substance abuse. We have given the story to one of the producer, and you might not be knowing about this short film Disha.
which is on substance abuse, received an International Film Festival Award. That's the thing. We are also not behind, but in spite of all that, Yadav sir and Gandhi sir, we need you. Your inputs are needed. How to go, how to abide this, how to fight against substance, because every alternate day we see not only general common public but our doctors are also victim of these cyber crimes. And what to say about our young generation, they are more victim. They never say what happened in their life, how they got affected by this cyber crime. They never tell to their mother, father, because nowadays this all because of we are having a credit card, debit card they are having, and parents are also giving the debit card because we never ask कि अरे कितना पैसा खर्चा हुआ तुम्हारा, क्या हुआ, क्योंकि कार्ड में पैसा जाता है, ये होता है और ऐसे में अफेक्ट होता है. तो आई नो वन केस, my one of my colleagues, non-medical colleagues, son lost 10 lakh rupees in this cyber crime. But he just said his parent was not knowing what happened, and that child was also not saying. This is the happen. There are so many stories are there, and today's topic chosen by our UP State Academy of Adolescents, really good topic, and they are always innovative. And this show is for parents. We are doing lot of work to reach to community, and this one chapter is there through which we are reaching to community, which is the need of our. We are having theme this year, that Indian Academy of Pediatrics theme. My theme is the to serve children, colleagues, and community. And really, through this program, we can benefit to the community as well as our colleagues and children also. I wish all the best. Thank you once again, Dr. Mr. Rita Yadav and Dr. Gandhi for coming and going to guide us for this. We Thank you, also have Rita Dr. Madam and President of the Academy. Thank you. I wish all the best. Jai Hind, Jai IIT. Thank you, sir, for your kind words. It is a proud privilege to have Dr. Rimjim Srivastav as our guest of honor for tonight. Dr. Rimjim is a senior consultant pediatrician from Chhattisgarh with training in pediatric gastroenterology, hepatology, and interventional endoscopy. Among others, she has held the position of the Secretary of Central Adolescent Health Academy 2021. Welcome, Dr. Rimjim. I request you to share your views with us. Thank you, Dr. Ritu. A very good evening to all of you. At the outset, I'm grateful to IAP and AHA Uttar Pradesh for having me. As Sir said, that cyberbullying is bullying with the use of digital technologies. Being bullied in any which way can have an adverse effect on the child's daily life and can take a toll on their mental, emotional, and physical well-being. And more importantly, they would feel embarrassed or afraid to report it. Then it becomes the duty of the pediatricians to identify these children in office practice. Children, teachers, and parents, all of them should be made aware of these, the effect of cyberbullying and the solution of cyberbullying. And similarly, another pressing topic is substance abuse, which in the light of rampant illegal availability, it's very commonly seen, and we all are aware of the detrimental effects of it. So we have some very eminent speakers and experts in this field, Dr. Ritu Gupta, Dr. Gandhi, and Mrs. Yadav, who would enlighten us on these topics and make us wiser. Thank you once again. Thank you, Dr. Rimjim. It is with gratitude for the immense support given to us by Central IP that I thank the esteemed office bearers who have so generously joined us tonight. Just to mention, Dr. Neela Mohan, National President-elect, Central IP 2025. Dr. Basavraj, immediate past President, Central IP 2024. Dr. Yogesh Parekh has joined us tonight. So, Dr. Yogesh Parekh, sir, Honorary Secretary General, Central IP 2025. So, sir, would you please like to say a few words? So, thank you very much, Dr. Ritu Gupta, madam. I told you in the beginning, while you are calling, whatever we are busy, we have to be here with the you people and for this, because you all are working hard to recognize and whatever the task we are doing, that
for the benefit of the society. So today you have selected the best topic, the cybercrime, substance abuse, and whatever the need of our adolescents. So thank you very much inviting us, and best wishes for the program, because I'm not going to take all the names to waste this time, because you have a expert like Dr. Harigam Gandhi sir and Dr. Nitya Yadav. So let us enjoy some academics and not to be huddled between the academics and the programs. Thank you very much. Sure, sir. Thank you. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to the esteemed mentors of Central Adolescent Health Academy, and it is my honor, Dr. Hima Bindu Singh, just to mention her name, Dr. Hima Bindu Singh, Chairperson, Central HA 2025, and Dr. Sushma Desai, Chairperson-elect to KAHA 2025. With pleasure and with honor, I welcome Dr. PDRS sir, Secretary, Central AHA 2025, and I request sir to say a few words. Thank you, Ritu Jain, madam. Good evening. I welcome all the esteemed dignitaries from present in this webinar. From Central IAP, Dr. Vasant Khalatkar sir and Dr. Yogesh Parikh sir. From AHA, Dr. Sangeeta Yadav madam, Dr. Sukanta sir, Dr. Ruchira Gupta madam, and today's experts, Dr. Harigam Gandhi sir and Ritu Yadav. I welcome all the other dignitaries. I am sure that the today's speakers doing they आज स्पीकर बहुत अच्छी तरह हम लोगों को एनरिच करेंगे अपनी नॉलेज से. And thank you, Ritu. Thank you, sir. We Hi. appreciate and acknowledge the presence of esteemed dignitaries present here tonight and seek their blessings for a successful session. Dr. Shanli Basan ma'am, Dr. Arun Sharma sir, Dr. Sukanta Chatterjee sir. Sir, would you like to have some? And we also have Dr. Sangeeta Yadav, ma'am, Dr. Ritu. So after Dr. Sukanta, Dr. Sangeeta. Yes. Dr. Sukanta sir, may we have your views on this? Well, it's an honor for me to get invitation, and I'll be enjoying the scientific deliberation, and I am also enjoying the dignitaries present here and their presence. That is what I want to say, and I love to get this sort of experiences of webinar and listen to it. And I wish it will become a success. Thank you. Much, sir. I welcome Dr. Sangeeta Yadav ma'am to our parenting talk show tonight, and I invite her to say a few words. Good evening. Thank you very much for the kind invite. And it is indeed my honor and pleasure to be with all of you and the stalwarts and the dignitaries. Dr. Vasant is there, Dr. Yogesh Parikh, and the wonderful AHA team of UP with the blessings of Central IAP. Everybody is there. And the best part is that your topics are really too good. And nobody wants to miss them. And the cybercrime is, all this is important, especially for the adolescents. And we have been signatory towards the ban of e-cigarettes. IAP was in July 2019. So I just wanted to remind everybody that we are signatory for that. And we all know that e-cigarettes are the gateway towards the substance abuse these days. So, and we have a lot of these adolescents and young adults who are into all this, and it's very convenient. And today we have wonderful experts who are going to enlighten us further and how to handle these situations. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. We have with us Dr. N.C. Prajapati, sir. Sir, would you like to share your views on the subject, sir? Dr. Prajapati, sir. Okay. So I welcome the office bearers of Academy of, sir. Prajapati, sir.
So can we have few words from you? I think the communication is lost. Some internet Yeah, issues some there. glitch. Yeah. So Ritu, just acknowledge Dr. Shamik Ghosh is also there, and Dr. Rashmi is also there, who's EB. Welcome, Dr. Rashmi, Dr. Shamik Ghosh. And we also welcome the office bearers of Academy of Pediatrics, UP branch, Dr. D.K. Bhagwani, Secretary, Dr. D.M. Gupta, President. We are grateful to have an excellent team in UPHA under the leadership of our founder, President Dr. Pyali Bhattacharya as our mentor. I request Dr. Pyali is not able to join us as yet. We are fortunate to have a dynamic secretary in UPHA, Dr. Ritu Gupta, who is an parenting expert and also a certified life coach. And she was the brain behind the parenting talk show series. I invite her to address the participants. Thank you, Dr. Ritu. Good evening and welcome everyone. So Adolescent Health Academy of Uttar Pradesh, welcome each one of you here. It's our pleasure and privilege to have all of you amongst us. I especially, really, we are very honored to have Dr. Hariom Gandhi with us as our expert, Dr. Monish Bhalla, who's another expert from narcotics division, and we have with us Rita Yadav ji. She is the inspector of cybercrime at Agra. So we are very privileged to have all of you. So welcome everyone. I'll not take much time. I'll hand it over. And also I just want to communicate Dr. Hima Bindu. She's busy with some personal commitment. She'll be joining. Dr. Geeta Patil also was very keen on joining, and she's busy in another TOT. And Dr. Sushma Desai, who's like chairperson for 2026, she is away to US, and she's sent her warm wishes to AHA Uttar Pradesh. So thanks for joining all of you. I hand it over. Shall I hand it over to Dr. Ruchira? I just want to introduce her. Sure. So I extend a hearty welcome to our esteemed experts for tonight. Dr. Hari Om Gandhi, Zonal Director, Narcotics Control Bureau, 2011. Dr. Monish Bhalla, former NCB officer and author, and Rita Yadav, Inspector Cybercrime, and our parenting expert, Dr. Ritu Gupta. It is my proud privilege to introduce the host for tonight's talk show, Dr. Ruchira Gupta. Dr. Ruchira Gupta is the National Joint Secretary Liaison to Central IIP 2024-25. She is a senior consultant at Kailash Hospital, Noida, and she has very successfully organized the Noida Pedicon, National Pedicon at Noida in 2022. She is Joint National Coordinator as well as Zonal Coordinator in numerous IIP programs. She is Editor-in-Chief of Child Today. She is a certified trainer with countless national IIP programs and has contributed immensely to the field of pediatrics in India. Over to you, Dr. Ruchira. It is an absolute pleasure to have you with us tonight. Thank you for the kind introduction, Dr. Ritu Jain. At the outset, I'm really thankful to UP Adolescent Health Academy and Kaha for giving us this opportunity to host this show, this talk show on this very, very important subject that is trapped behind screens and substances, safeguarding adolescents in a changing world. Dear friends, we know that development of adolescent plays a crucial role in understanding the risks and impacts of both substance abuse as well as cyberbullying. During the teenage years, the brain undergoes significant changes, particularly in the prefrontal cortex. And we all know that prefrontal cortex governs decision-making, self-control, and judgment. At the same time, the limbic system, which is responsible for emotions and reward-seeking behavior, is highly active, which often leads to take impulsive actions by the adolescents.
This neurological imbalance makes adolescents more susceptible to risky behaviors such as experimenting with drugs, alcohol, and sometimes sex. And they are more emotionally reactive to societal pressures, including cyberbullying and substance abuse. So we can say like this, that adolescent brain is like a car with a good accelerator but a weak brake. And the risk-taking behavior peaks during adolescence because the parts of the brain that respond to rewards develop before then that part which controls the impulses. That is why this mismatch happens. And this substance use during this sensitive period of development of brain can disrupt brain growth, can impair cognitive functions, and can put the adolescent to risk of long-term addictions. Now, meanwhile, the emotional toll of cyberbullying, such as anxiety, depression, low esteem, it can be intensified by a teen's still developing ability to cope with the stress. Here, it is important that recognizing how the adolescent brain develops helps us better support youth using education, early intervention, and promotion of health coping strategies. Dear friends, we know substance abuse and cyberbullying, these are two critical and interconnected issues affecting today's adolescents in this today's digital world and fast-paced environment. As we know that the young people navigate the challenges of identity, peer pressure, social acceptance, many are vulnerable to experimenting with drugs, alcohol, etc., etc. Simultaneously, the increasing reliance on digital communication has made cyberbullying a pervasive issue affecting the mental health and self-esteem. So, dear friends, the widespread use of social media and digital platform have risen to have given a platform to actually cyberbullying, harassments, threats, abuse conducted online. So understanding the causes, effects, and preventive measures of substance abuse and cyberbullying is crucial for fostering a safer and healthier environment for youth development. We also know, dear friends, that today's teen, when is growing up, is facing challenges. These challenges are different what the teens faced around a decade ago. How are they different? We all know that today's teens, they are exposed to the rapid development of technology. They are in the world of rapid development of technology, changes in social dynamics, and evolving societal pressure. So, with this background, I will like to move forward to our experts. Today we have Dr. Hariom Gandhi. Dr. Hariom Gandhi is DIG NDRF and he was the former zonal director of Narcotics Control Bureau. Also, we have, as Dr. Ritu said, we have Dr. Munish Bhalla, who's an author and is expert in narcotics and has been an officer in Narcotics Control Bureau. And again, with the very young and the smart lady officer of UP Police, Miss Rita Yadav, who's expert in cybercrime, in cyberbullying, cybercrime management. So, starting with Dr. Hariom Gandhi, since you have such an immense experience of you have been there in Narcotics Control Bureau for such a long time, you would have come across with such kind of cases very frequently, and that too among adolescents. I just want to know, what are the common substances which is being used and abused by adolescents? Yeah, good evening to everybody, and thank you very much for inviting me for this interesting talk show, which is really a problem for all over the world,
Basically, if we see world over, drug abuse is increasing day by day. And in India also, it is rapidly increasing. And the substance which are used for the drug abuse, their number is also increasing. So we start with the person who's taking alcohol. They start with the alcohol or with the smoke. That is again a drug, though it is legal drug. The moment somebody tried the alcohol and the smoke, they slowly go to the marijuana. From marijuana, it becomes the gateway to the higher drugs, maybe the opium, maybe the cocaine, then the synthetic drug, MDMA, LSD, yaba. There are hundreds and hundreds kinds of that drug. Right now, we are having the cannabis, which is coming from the outside, which is more potent than the Indian one. Then there are the prescription drugs, which are easily available on the medical shops, alprazolam, diazepam, even the cup syrup people are using. Opioids like you say simple opium, you say the fentanyl, which is a very high potent drug. And millions of the people are dying because of the overdose of this drug. So fentanyl is also being used. Then morphine is being used. You name it, and people are using it. Ketamine people are using, which is normally for the anesthetic for the animal. So this is a problem which is happening every day, everywhere. We are in a mood to denial. You know, it is not happening. But fact is that it is happening all around us. If we see the poor people, they are using different kind of the drug. They are using inhalants. Like for example, पंचर जोड़ने वाला जो tube होता है, they simply sniff that. So whosoever is getting whatever kind of the thing, some person is sniffing the thinner itself. Some person are using the iodex on the bread, you name it, and people are doing. So that is the name of certain drugs. We will talk further about other things. So this is the beginning part. Of course, e-cigarette, as ma'am was talking in the beginning, there is again a serious problem from e-cigarette. It's a high dose of nicotine. Then they choose the other drugs. But fact remains, our youth, our adolescents wants happy hormone, whether it's a dopamine, whether it's a serotonin, whether it's a endorphin or oxytocin. Yes. Dr. Ruchira, you are muted. Sorry for this. So, Dr. Gandhi, very nicely you have elaborated whatever is this economic status. People, for whatever reasons, the kind of substances they are getting, and they are using it. Now, I have heard that people are mixing these drugs also, which forms a real deadly combination. Sometimes can be dangerous also. Do you come across with such kind of things also? Such kind of cases? Yeah, absolutely. That is a highly dangerous. Like for example, opium, that is a depressant. Cocaine, that is a stimulant. If you combine these two drugs, like in a, मैं थोड़ा आपको lighter पे मैं बताना चाहूँगा. Alcohol is a depressant, and Red Bull is a stimulant. What people are doing, they are mixing Red Bull with the alcohol. So alcohol का impact, which is a damaging impact, वो उनको पता नहीं चल रहा है. At the same time, Red Bull is also creating the problem. So this mixing of the drugs is a serious issue where they use the mixed kind stimulant, then the hallucination is there like LSD. So when they go to the doctor, when they are having the problem, doctor doesn't know how to treat. Which kind of the symptoms they will be treating? Are symptoms of the depressant, symptoms of the stimulant, or symptoms of the hallucination part of the things? So that Thank you. It is happening. Thank you. Thank you, Dr. Gandhi, because I was watching a series on not Netflix, and it was like Dabba Cartel, where they had shown this drugs, these mixing of drugs and all. So, in fact, now media also want to, guide us about that and teach us about that these are the things which are happening, and beware. Dr. Bhalla, you are author and you have got enormous work and research in the field of narcotics.
So, Dr. Bala, can you tell us, like in your own experience, what are the signs and different stages of use of, what are the signs of drug abuse which adolescent would have shown, and what are the different stages of use been seen in a particular person, adolescent? We are more interested in adolescent right now. Thank you for inviting me, Ruchira. And thanks, Gandhi sir, for inviting me here. It's a great opportunity because I have been doing a lot of work on this subject, in fact. And India, especially India, we are among the youngest populated country in the world. And everything starts from this particular age, from 10 to 19. That is the age. And there is where we have to, in fact, see that our kids, grow up in a proper environment and they are not falling the trap of this substance abuse. Just now, Gandhi sir explained very nicely, what are the drugs people are using. And it's so easy, and it all starts with a cigarette, and especially nowadays, the vaping, the vapes. So this is how it starts. But then what is the sign that your kid is doing it? How do you come to know? In fact, my experiences and that the parents, the family comes to know the last. And that is the problem. The parents, everybody knows around that this boy or a girl is doing something, but the parents don't know. And there is where, in fact, what we have to see, we have to, I say that we have to educate and train the parents, not the kids. Because the parents, once they realize that the kids are having these problems and they understand the science which they give. This is what you're asking me. What are the signs? How do you come to know that your kid, I call them kid only. Okay. Anything below 19 is a kid. Okay. So I call them kids. And these kids, when they are involved in something, for whatever reason, let's not talk about the reason. Let us also not talk about the substance, which substance they are using, but what are the signs they have. So there are 4 categories of signs, what I feel, One is the physical sign one gives. The other is the behavioral sign. Then the emotional sign is there. And the social sign. Social sign means suddenly the boy or the girl will change their friend circle. Suddenly they will change. That is the one sign. Suddenly they will change, the pura circle change kar denge. They will have a new circle. The parents will not come to know this. Okay. Then there is physical sign, which is, I think, by you all are doctors, so you are better educated on this subject than me, that what happens, that eyes dilate and slurring is there and all those things. These are physical signs. Everybody knows. But the other sign is when the kid goes to his room, the boy or a girl goes to his room and does not come out, tries to avoid the family members, tries to avoid the circle, that is the typical sign. Okay. He'll be in his room for whole day. He'll be sleeping. Just now, Gandhi sir, in Ahmedabad, a case was found where 4 kids were found to be abusing a substance, and they were all maybe 12 years or 13 years. They go to a tuition class, okay, and once they come back, they don't get up. They are in the room, they are sleeping. So the parents feel बहुत थक गया है बच्चा, बहुत पढ़ के और सो रहा है. And slowly it came to know that they all were taking some substance, and then once they go to the room, they sleep. Okay, and the parents think कि पूरी रात पढ़ा होगा, अब सो रहा है. So these are the signs. And I personally feel that I'll request such a nice body of doctors, that you should train the parents
बिकॉज किड को आप ट्रेन नहीं कर सकते एट दैट एज। आपने यू टोल्ड मी द लिम्बिक एक्टिविटी, you know, he or she will not listen to you. You have to train the parents. Thank you. Yeah. Thank you, Dr. Balla. You had very rightly pointed out the answer. The answer basically goes in whole this discussion is that we need to train the parents. We need to make the parents understand that they will have to understand their child, the change in behavior, etc., etc. As we know that, Ikshita, I'll just add something here. please. Yeah. So, Dr. Balla, I'm Dr. Ritu, and what the intention of this parenting series is to educate the parents, is to make them aware. And you very rightly said that the training which is required is for the parents. And with that intention only the series was started. So that's why we call it parenting talk show series. Yeah. And we not only have doctors here, we also have parents of adolescents who have joined the show today. Excellent. Thank you. And also, I will like to add here that even if we doctors, we are also parents. Our children are of that age. We also should be aware about all these things. Yes. Substance abuse is rampant now. We are seeing everywhere. Even a class 7 kid is exposed to substance abuse. Same way, cyberbullying is also very, very common. And substance abuse, one can find out through his physical behaviors, through emotional and social behaviors. Sometimes cyberbullying is not that very obvious. The children keep on keeping it to themselves for some time. So now we have expert with us who deal with cyber crimes and is giving solution for that, Miss Rita Yadav. रीता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, साइबर बुलिंग क्या है और हाउ डज इट लुक लाइक? मैम, सब लोगों को मेरा नमस्कार। सब लोग, इतने लोग हमारे लोग आए हुए हैं, बड़े सम्मानित लोग हैं। और दूसरी चीज, तो आपने पूछा साइबर बुलिंग क्या है, तो मैं बताऊँ साइबर बुलिंग का मतलब क्या है कि आप इंटरनेट के जरिए कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, मोबाइल फोन के जरिए, किसी डिवाइस के जरिए, या आप मान लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आपका यूट्यूब, आपका व्हाट्सएप है, तो ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आप इसके माध्यम से, होता क्या है, अब इसके माध्यम, जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे हैं, अब बच्चों को क्या करना है, मान लीजिए बच्चे हैं और उनको ज्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन ना उनको पता है साइबर क्राइम क्या होता है, इसका अपराध क्या है। आजकल के क्या है, जो नए बच्चे हैं, इनको व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे आजकल बहुत ज्यादा, मतलब सभी काम उसी पे कर रहे हैं लोग मोस्टली। अब क्या है, अब मान लीजिए साइबर बुलिंग क्या है, मतलब जैसे कि आपने कहा कि आपको ये इस तरीके से जब आप लोग आते हैं और आप उस पर चैटिंग होती है, कोई और बात होती है, तो क्या होता है, बच्चा एक मानसिक, कोई अगर मान लीजिए चैटिंग हो रही है, ठीक है, और कोई ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे कि बच्चा अपमानित होता है, या दूसरा बच्चा दूसरे बच्चों को कर रहा है, तो क्या होगा, वो अब साइबर बुलिंग में आ जाएगा, वो थैंक साइबर यू। बुलिंग। ठीक है, बिल्कुल। जैसे अब जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, अब हम, एक तो देखिए फिजिकल होता है, हम सामने आमने खड़े हैं और हम उसको किसी को बोल रहे हैं, अरे भाई ये तू ऐसा है, तू इस टाइप का है, तू गंजा है, या तू जैसा XYZ कुछ भी कह सकता है। ये क्या हुआ, ताना मारना। एक होता है व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो कर, आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल सभी इंस्टाग्राम फेक आईडी बना लेते हैं। आप अभी, क्योंकि उसमें 18 साल मांगता है, लेकिन लोग देते हैं 18 साल, बट छोटे बच्चे आजकल इंस्टाग्राम आईडी बना रखे हैं, फेसबुक उनकी आईडियां हैं, यूट्यूब वो चला रहे हैं। तो अब क्या है, अब मान लीजिए इसमें क्या होता है, दो चीज, इसमें नोन भी हो सकता है और नोन भी हो सकता है। जैसे अब मान लीजिए कोई किसी को टारगेट करना चाह रहा है, कोई बच्चा, अब वो स्कूल में पढ़ता है, अब वो चाहता है मैं अननोन, तो किसी का फेक आईडी बनाई किसी और के नाम पर, और उस बच्चे को, चूंकि उससे आपस में दुश्मनी है, जो भी चीजें आजकल क्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत ज्यादा मामले आते हैं स्कूलों में। अब मेन लड़ाई होती है कि भाई तूने मेरी फ्रेंड को कैसे पसंद कर लिया, तूने मेरी फ्रेंड को पसंद कर लिया। ये बात जब आती है तो क्या होगा, अब जो दूसरा बंदा हो जो करता है, वो क्या करेगा, फेक आईडी बनाएगा। ऐसे मेरे पास बहुत से केस आए हैं, फेक आईडी बना के अब उससे उस लड़के को क्या करेगा, कुछ ना कुछ मतलब इस टाइप का, तू मोटा है, तू इस तरीके का जो भी है,
झूठी और उसके फोटोज को मॉर्फ करके कहीं और भेजेगा, या लड़की होगी तो उसके फोटो को मॉर्फ करके अन्य ग्रुपों में भेजेगा। व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया आपका, मतलब बहुत से ढेर सारे ग्रुप बने हुए हैं। तो क्या होता है फिर ये साइबर बुलिंग की परिभाषा में आने लगता है, क्योंकि ऑनलाइन ये जो भी बुलिंग हो रही है वो जो भी ऑनलाइन। बुलिंग ऑनलाइन हो रही है हाँ बेसिकली। यस, बिल्कुल सही है। इनफैक्ट जो आप कह रही हैं रीता जी, ये इतना कॉमन है। आई हैव सीन। और आजकल बच्चे जो साइबर बुलिंग में करते हैं, उसमें मोटा पतला तो मतलब वो ट्रेडिशनल लेवल पे करते थे कि तेरा मोटा पतला, तेरे बाल ऐसे, तेरी हाइट ऐसी। आज की डेट पे जो होता है, व्हाट आई सी, दे टॉक अबाउट देयर सेक्सुअल आइडेंटिटी। यस यस आई हैव सीन, सबसे ज्यादा होता है that you यस look यस like less, you look like gay, you look like this, you look like that. That is the way they hit their psyche. So ये वो एक बहुत कॉमन टाइप की साइबर बुलिंग है which lot of teenagers are exposed to it. Miss Rita, I want to know, क्या कुछ डिफरेंट साइबर बुलिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं क्या? हाँ, ओके, साइबर बुलिंग क्या को भी। बता सकते हैं हमें? हाँ, जैसे साइबर बुलिंग के बहुत टाइप्स हैं। देखिए, साइबर बुलिंग क्या है, एक तो हो गया आपको, मतलब थोड़ा हिंदी में बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए किसी को ताना मारना है, ठीक है, किसी के साथ गाली गलौज करना है, ठीक है, किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करना है, ठीक है। जैसे आप किसी को, अब क्या होगा, बंदा बाहर नहीं जा रहा है, कहीं कुछ नहीं कर रहा है, तो ये हो गया। और तब इसके टाइप का कोई अंदाजा नहीं बता दूं आपको, लेकिन मोस्टली ये टाइप होते हैं। और साइबर बुलिंग में क्या है, बेसिकली क्या होता है, बंदा ऑनलाइन आपका पीछा करता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता, बट वो आपका ऑनलाइन पीछा करता है। उससे क्या है, उस बच्चे में उसका मानसिक स्तर इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि वो ना तो घर पे बता सकता, ना वो किसी और बता सकता, ना किसी पेरेंट को बता पा रहा है। तो डर रहा है कि कल को मेरे मोबाइल छीन लेंगे, मेरा इंटरनेट एक्सेस खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इनके प्रकार हैं ये। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल बुलिंग में और साइबर बुलिंग का ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि ट्रेडिशनल बुलिंग में तो सामने आपके है जो बुली कर रहा है, Yes. और साइबर बुलिंग में तो पता ही नहीं है। ट्रेडिशनल बुलिंग में एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा जो बुली करने वाला बंदा है, लेकिन साइबर बुलिंग में 24/7 दैट पर्सन इज देयर एंड यू आर एक्सेसिबल टू देखिए, दैट पर्सन। हाँ, साइबर बुलिंग और टेंशन बुलिंग में अंतर ये है थोड़ा सा, कि टेंशन बुलिंग में फिजिकली सब कुछ होता है, आमने सामने बंदा है, सिंपल सी एक परिभाषा। और साइबर बुलिंग में बंदा दिखाई नहीं देता, राइट, दिखाई नहीं बिल्कुल देता, सही कहा। हरकतें पूरी कर रहा है। जो आप फिजिकली हरकतें करते हैं वही हरकतें ऑनलाइन चैट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, या आपका मतलब जो भी एक्सेस है उसके माध्यम से कर रहा है आपके साथ। उसमें क्या है, तो क्या है, जैसे एक हमने अहम है, अब आपने कहा, बहुत अच्छा बताया आपने मैम, कि साइबर ये जो टेंशन बुलिंग जो है वो क्या है, उसमें क्या है, बंदा सामने आया, गाली दिया, तुम्हें जो भी चीज कहना हो कहा, जो छेड़खानी करनी हो, मान ली कंधे कोई लड़की है तो उसके कंधे बाहर रख दिया, जो मतलब एक प्रकार से फिजिकली हो रहा है, उससे बंदा सामने दिख रहा है, भाई एक्यूज दिख रहा है, बट ऑनलाइन में नहीं दिखता। वो क्या है, वो अच्छा दिखा, और उसके बाद मान लीजिए आपको एफआईआर लिखानी, जो भी करना कर दिया, अपना पुलिस ने कार्रवाई की, भेज दिया। ऑनलाइन में क्या है, आप 24/7, आपने कहा, बहुत सही कहा मैम, 24/7 में क्या है, अब वो उसको जब भी उसको मौका मिलेगा, जब सो रहा है, उठ रहा है, तभी उसको चैटिंग कर रहा है, तभी उसको कुछ भेज रहा है। अब वो जो जिसको कर रहा है, वो आप सोचिए कितना हैरेस हो रहा होगा। तो उसमें क्या होता है, हम पुलिस वालों का क्या रोल होता है, हम लोग उसमें ये रोल होता है कि हम, अच्छा फिजिकल में क्या होता है, मैम आपने शिकायत की मुझे कि मैम ये बंदा मुझे, मेरे बच्चे को छेड़ रहा है, या इसके साथ गाली गलौज कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया, तो मैंने उठाया, एफआईआर लिखी, ला के जेल भेज दिया, या नहीं तो नोटिस दे दिया, माँ बाप को बुलाया, बच्चा है तो उसको, बच्चा है तो उसको हमने नाबालिग उसमें आपके हमारे यहाँ वहाँ कोर्ट में पेश कर दिया। जुवेनाइल। यस, जुवेनाइल में। और मान लीजिए, अब अब मान लीजिए आपका साइबर बुलिंग हो गया। अब उसमें हमें टाइम लगता है। जैसे मैम क्या होता है, अब मान लीजिए इंस्टाग्राम पे है, अब मान लीजिए इंस्टाग्राम पे एक फ्रेंड है, अब उसको उसे धीरे से कुछ सेक्सुअल बातें डाल दी, कुछ ऐसी चीजें डाल दिया, कुछ उसकी फोटो मॉर्फ करके डाल दिया, कुछ ऐसा बातें लिख रहा है, किसी के साथ उसका नंबर जोड़ दिया लड़की के साथ कि इस नंबर पे कांटेक्ट करो, ये ऐसी टाइप की है। अब बंदे ने फोन करना लो, अब ये हरेसमेंट है ना मैम। आजकल क्या बिल्कुल करते हैं, सही आपने बोला। बच्चा फोटो लगा एक्चुअली के और उसके फोटो इंस्टाग्राम पे बना दिया, उसे लिख दिया नंबर, ये पॉजिटिव है, बच्चे को नहीं पता है ये पॉजिटिव। अब क्या हुआ, अब इंस्टाग्राम तो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। अब उनमें से अब आप समझिए, हर एक केस मेरे पास ऐसा आया था, उसमें क्या ओमेंगल पे था। अब क्या हुआ, वो
अब वो लड़की इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गई कि वो सुसाइड करने के तैयार हो गई थी। पता है आपको, उसके माँ बाप मेरे पास आए और जब मैंने उससे बात की, मैंने बच्चों को समझाया, फिर मैंने उसका 79(3)B में हमारे एक कार्रवाई होती है, मैंने उस वीडियो को हटवाया पूरे उमंगल से लेकर पूरे गूगल पे जितने भी चेहरा लगा के कि जितनी भी फोटो जो सब हट जाए और वो दिखाई ही ना पड़े, इस टाइप की जो भी फोटो हो। तो वो हाँ, लेकिन अब क्या हुआ, हटने में 79(3)B में जो हमने कार्रवाई की, अब क्या हुआ, वो मैम टाइम टेकिंग होता है। अब इंस्टाग्राम हमारे यहाँ तो नहीं है, कहने के लिए तो था भाई पुलिस ने कहा फट हो गया, नहीं, हमें उसके एक दिन 24 घंटे 48 घंटे का रिस्पॉन्स चाहिए। आप ये सोचो मैम 48 घंटे में इस बच्चे के साथ क्या होगा, सोचने का विषय आप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं मिस यादव। ये बहुत ही गहन प्रॉब्लम है और इनफैक्ट ये ट्रेडिशनल बुलिंग से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा चिंताजनक बात है इसमें। और इसको कैसे हमें डील करना है उसके लिए हम आपके पास दोबारा आएंगे मिस यादव। मूविंग ऑन टू अगेन डॉक्टर गांधी। डॉक्टर गांधी, आप एक एडोलसेंट गर्ल को के पेरेंट हैं, तो आई मीन डेफिनेटली यू मस्ट बी गिविंग लॉट ऑफ थॉट्स अबाउट कि बच्चे के व्हेन द kid, when the adolescent, there is a stage when the adolescent is experimenting, and there is another stage when the adolescent has gone into addiction with the substance abuse. तो कुछ ऐसा है जिसमें पेरेंट्स इस बात को डिफरेंशिएट कर पाए दैट व्हाट्स द whether the child or adolescent is in experimentation stage or addiction stage. Dr. Gandhi, any your views about it? इनफैक्ट हम लोग जब भी बात करते हैं बच्चों से तो हम लोग बोलते हैं कि पॉइजन अगर आप एक बार भी खा रहे हो तो दैट इज बैड फॉर यू। सो एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट ऐसा है कि of course parent will not come to know कि when he is doing experiment because he is with his group of the people, उसके साथ में उसके friends हैं। लेकिन हम इतना जरूर जान सकते हैं कि अगर उसका peer group जैसा है वैसा वो जरूर करेगा। अनदर पार्ट कि आप जो उसको पैसा दे रहे हो बट ही इज नॉट गिविंग द अकाउंट ऑफ द मनी कि वेयर ही हैज स्पेंट दिस। सो दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द थिंग्स। सेकंड, जब उसने एक बार स्टार्ट किया, वी कॉल इट द रिक्रिएशनल टाइप से वो स्टार्ट कर रहा है, देन ही मूव टू द प्रॉब्लमेटिक स्टेज। जब लगातार यूज कर रहा है देन थर्ड स्टेज कम्स अ डिपेंडेंसी लाइक द अल्कोहलिज्म, और जहां बिना ड्रग के उसका काम नहीं चलेगा। when a child comes to the second stage, तो उस पार्ट में क्या करेगा, जैसे भल्ला सर बता रहे थे कि वो छुपाने की कोशिश करेगा, बाथरूम जाएगा, परफ्यूम को यूज करेगा, सेंट को यूज करेगा, पैसे चुराएगा, बीमार होगा, अच्छे मार्क्स आ रहे थे तो ही विल बी लूजिंग द ग्रेड्स, स्कूल आल्सो माइट ड्रॉप आउट उसका हो जाएगा, and there might be a police case also like in NDPS Act section 27A, if a person is consuming the drug तो उसको 1 ईयर तक का पनिशमेंट है। एंड इट ऑल्सो हैज बीन सीन कि बच्चे लोग जो ड्रग कंज्यूम करते हैं और जब बाद में उनको पैसा नहीं मिलता, दे themselves become the traffickers, पैडलर बनेंगे, पैडलर से ट्रैफिकर बन जाएंगे। then the quantum of punishment goes to 1 year to 10 year, and it's a very serious issue in the society, or if you see across all over the world, जो भी ट्रैफिकर्स हैं they start with the drug consumption, they start consuming the drug as a experiment only, कि ट्राई करके देखते हैं यार है क्या उसमें। एंड इट इज वेरी ट्रू कि फर्स्ट टाइम जब भी लोग ड्रग ट्राई करते हैं, ड्रग उसको मजा आता, ही एंजॉय द ड्रग, ही एंजॉय द ड्रग। सेकंड टाइम जब वो ड्रग यूज करता है इट्स ए 50-50, and third time onward he becomes the dependence. So my request to the parents and everybody would be there कि जैसे I am a father, so I take care of the account of my children. I say कि तुमको जितना पैसा खर्च करना है करो, but I will come to know कि the moment you are spending the money, I'll be getting the OTP, I'll be getting the statement, so I know where they are spending. You are going to the restaurant, it's okay. You are buying something, it's okay. But if the money is spent on something else, then it's a red flag. So all the parents should be very careful कि what is their peer group, how they are spending the money, how they are spending the time. And another thing, with this discussion I would like to tell you, हम लोग के forces में एक body system होता है
कि अगर मैं जो कर रहा हूँ मेरे साथी को पता होगा, तो पेरेंट्स को कांटेक्ट रखना चाहिए उसके बडी से। और दूसरा, अगर बडी आपको पता है कि बडी गड़बड़ है, ही इज कंज्यूमिंग द ड्रग, तो बडी को चेंज करने का जरूरत है। दिस इज हाउ। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया डॉक्टर गांधी, दैट दिस बडी सिस्टम इज रियली a very good thing, and knowing peer group is need of an hour for all adolescent parents, teen parents. Even मैंने कभी ऐसा सुना था कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं which they are, if they have been tasted once, then the risk of addiction multiplies. I mean, they will like to have it again and again. It's not like one time liya and then it was only for fun and then I'm not going to have it again. So we'll have to guide our parents, our children also, that not even one time experiment with drugs is needed. Dr. Bhalla, as you have so much of research and in this subject, what role does peer influence and social media play in promoting substance use? We know there is a role, but how does it happen, and how much that role is, we want to know from you, sir. Dr. Bhalla, please. Unmute, sir. Unmute yourself, sir. So, ma'am, what Dr. Gandhi was saying and how he was explaining, I think he has made a point, that buddy system. And this is what I was telling, that they tend to change their buddy, basically. So this is what I was trying to say. Anyway, coming back to this, social media definitely has got a huge role. As you rightly said in the beginning of the program, that the times have changed. If we go back a decade or 2 decades back, then we would never have thought that a kid can be influenced by something which is virtual, maybe. Or maybe those so-called heroes, the so-called heroes in the social media, people start following them. And they feel that it's a cool thing to do it. That cool thing is the problem. People feel that, okay, this is cool, vaping is cool, or maybe weed is okay, and there's an entire lobby of people, very mature people, who are promoting, saying that weed is okay. Absolutely. But as you said, experiment even once, it's a poison, so even one experiment is not to be done. Okay. So there is where the social media plays a very big role, and what Ms. Yadav was saying about the cyberbullying. From there, I got a clue that how do you control this? How do you control that the wrong feeds don't go to your children? So how do you filter that? So there is no possibility that you will be able to filter it. Every person is having a smartphone. Okay, they're glued to it, and they are having so much information, so-called information, through that media, which influences them. So social media has got a big role, and similarly, the peer role is there. That is also there. People feel that वो कर रहा है ना, वो तो he is so smart यार, हम भी करेंगे. उल्टा है. ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं इसलिए हम नहीं करेंगे. So people. Actually, sir. जी. Yeah, please. Please. So somehow what I feel that the way Bollywood and Hollywood and all these things, they are like heroes, they are doing these things. Yes. In maybe whatever role. So children idolize them, and then they feel that those children who are doing it, they are smarter ones. Yes. So sometimes children get that kind of fear also, the child. If I won't do that, I will be called a dumb. Yeah, I'm not cool. I'm not cool. I'm down market. In their I'm language. down market. Absolutely. So recently, I think a year back or so, in Punjab,
the government made it a point that the big singers which go for the show, they should not promote guns and alcohol. Okay, if you remember, there was a big thing going on in Punjab, especially the singers used to promote guns and alcohol. Okay, so similarly, the media, what it shows as a cool thing, that influences. And as you rightly said, that is the age where this influence, that goes so deep inside them, and they feel that if they don't do, see, I'll tell you what सब लोग कर रहे हैं, इसमें क्या है? That बच्चों को जो वो आ गया ना, सब करते हैं, इसमें क्या है? So that is where the harm starts. Absolutely. You're very right, Dr. Bhalla. And I mean, when I'm discussing this, since I am also a mother or a parent of a teenager son, so, it worries me also. So, I mean, let's talk about, come back to cyberbullying issue again. Miss Yadav, about cyber, how will the parents know that their adolescent, their teen or child is being cyberbullied? What are the red flags the parent should look out for? देखिए ऐसा है मेरे पास एक फॉर एग्जांपल एक केस बता रहे हैं छोटा सा। एक लड़की थी बहुत मतलब अराउंड 14 ईयर की थी, मेरे यहाँ थाने में एक केस आया था। तो ये जो आप कह रहे हैं इसी बात में बता रहे हैं। तो पेरेंट्स जब आए तो मैंने उससे बात की, क्या क्या हुआ, क्या दिक्कत है। तो उसको एक लड़का उसके व्हाट्सएप पर भी और किसी नंबर अननोन नंबर से, नंबर उसका नहीं था, और वो लड़की परेशान भी थी, वो शक तो कर रही थी लेकिन वो परेशान थी। तो वो बाबा व्हाट्सएप से उसको कुछ अश्लील मैसेज आ जाए, कभी किधर से आ जाए, कभी तू इधर आ जा, मतलब थोड़ा गंदा टाइप का मैसेज उसको डालना शुरू किया। इंस्टाग्राम पे उसकी फेक आईडी बना करके उसको डाल दिया। वही जो बताया मैंने आपको, नंबर डाला और उसके पास कॉलिंग आनी शुरू हो गई। वो लड़की इतना परेशान हुई कि वो लास्ट में, अब आपने कहा पेरेंट्स वाली बात आई, अब पेरेंट्स वाली बात आई। आप देखिए वह लड़की 1 महीने तक उस चीज को झेलती रही। क्यों? और बहुत नोएडा की बच्ची थी। और मैं आपको बता, क्योंकि थोड़ा सा कम पढ़े लिखे थे तो उनको नहीं पता है, बच्चे को मोबाइल चाहिए, मोबाइल दे दिया, बट उन्हें नहीं पता कैसे इसको क्या करते हैं। तो बच्चा कह रहा है ऑनलाइन पढ़ना है तो ठीक है, ओके, माँ बाप ने ला के दे दिया। अब उससे जब हुआ तो अब वो बच्चे क्या हुआ, वो लड़की चुप चुप रहने लगी। वो कमरे में बाहर ना निकले, बाहर निकले तो ऐसे इरिटेटिंग टाइप बातें करे, मतलब थोड़ा सा। तो उसके फादर को थोड़ा शक हुआ, तब उसने, अब देखिए एक गंवार व्यक्ति जो कि अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं, सब्जी बेचता है, उसने अपनी बेटी को बुलाकर अपने गोद में बिठाया। बोला बेटा तुम बहुत परेशान हो, मैं 15 दिन से देख रहा हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है बेटा, बताओ। तो वही बात आपने कहा ना, पेरेंटिंग वाली बात। तो जब आप बच्चे को प्यार से किसी चीज को लेके आएंगे तो उस बच्चे ने 1 घंटे 2 घंटे बाद जब उसको बहुत प्यार से बैठ कर बात की, उस बच्चे ने पूरी पूरी बात बताई कि पापा मेरे साथ ऐसे ऐसे एक लड़का है, अब लड़का है लड़की है नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे करता है। वो हमारे पास आए, मैंने FIR लिखी। लिखने के बाद तो उन्होंने जो जो बताया ना, आपके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए भाई, आप बच्चा देखो ना, आप कि आपका बच्चा पहले कैसा था और कुछ दिन बाद उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, उसको इरिटेट हो रहा है, आप कोई बात कह रहे हो गुस्सा हो रहा है, आप कुछ मतलब ऐसी जब जब उसके साथ साइबर बुलिंग होगी तो क्या होगा। जैसे आपने बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है बच्चों में माँ बाप की, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पे नहीं है, बच्चा भी अलग अलग रह रहा है, माँ बाप भी अलग, ऐसे कि माँ बाप है हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चा घर पे अकेला है, और उसके साथ अब साइबर बुलिंग कैसे होता है। देखिए मैम, साइबर बुलिंग कई तरीके से हो सकता है। सर्वेंट भी कर सकता है, जो आपके घर में काम करें, नौकरानी भी कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है। वो बच्चे को कैसे उसको अपनी तरफ लाना है, किस तरीके से लाना है, ये अलग चीज है। तो जब पेरेंट्स बाहर है, अब बच्चा अपने पेरेंट्स से बहुत, जितना क्लोज अपने सर्वेंट से होता है वो उतना अपने माँ बाप से क्लोज नहीं होता। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने बताया तो जब ये चीजें, तो आप नींद नहीं आना, इरिटेट होना, आपसे छोटी छोटी बात पर लड़ाई करना, आप कुछ कहोगे तो कभी कभी क्या होगा, वो कुछ ऐसी कोटेशन डालेगा इंस्टाग्राम पे कि मैं ऐसे जीना नहीं चाहता, मैं इस तरीके नहीं करना चाहता, कुछ कुछ ऐसी चीजें डालता रहे। मतलब एक शुरुआत है ये। तो पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि यार बच्चे में कुछ चेंज आ रहा है।
तो मैंने क्या बताया, फिर उसके बाद FIR लिखी, मैं जब देखा तो मैं उस लड़के को, जब अब चूंकि वो भी नाबालिग ही था, जब उसको लेकर के आए तो मैंने दोनों दोनों पेरेंट्स आ गए, इकट्ठे हो गए। अब उधर के पेरेंट्स भी आ गए, इधर भी आ गए। अब बोले जी बच्चा नाबालिग है जी, आप देख लो जी, ये देखो। मैंने कहा देखो क्राइम है, अब तो जो बच्चे का बाप कहेगा, बच्ची जो कहेगी वही होगा। तो मैंने इसको नाबालिग कोर्ट, मतलब वहाँ जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया। बट उस टाइम उसकी बच्ची के चेहरे पे जो खुशी थी, वो आप सोच नहीं सकते। उसको ये लगा कि मेरा एक समय, मैंने उसको बुलाया, मैं बैठाया, मैं बेटा बैठ। और चूंकि हम लोग वर्दी में नहीं होते हैं, क्योंकि जब जुवेनाइल बच्चे होते हैं तो हम लोग थोड़ा वर्दी हटा देते हैं, वर्दी में नहीं होते हैं, उनसे उस तरीके से बात करते हैं जैसे एक आम पब्लिक की तरह। तो तब उसने बताया, कहा मैडम मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम ये चला गया, मैं मुझे लगता था मैं मर जाऊं। तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग को भी बड़ा भावुक कर देती हैं। तो मिस रीता, आपका ये कहना है कि हम अगर पेरेंट्स को डाउट हो रहा है कि आपका बच्चा अकेला रह रहा है, या आपका बच्चा इरिटेबल हो रहा है, या उसके Yes. स्कूल में परफॉर्मेंस खत्म हो गई है, या बात बात में चिड़चिड़ा रहा है, या अलूफ मतलब जैसे मैंने बोला अकेला रह रहा है, और अ, कुछ भी इस टाइप की पिक्चर है, तो पेरेंट्स को डेफिनेटली उससे बच्चे से पूछना सोचना चाहिए चाहिए, और सोचना चाहिए। तुरंत वो साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना चाहिए, है बिल्कुल, ना? साइबर क्राइम जैसे मान लीजिए, मैं आपको छोड़ी बताऊं सर, देखो हमारे यहाँ थानों में, अब मैं आपको बताऊं, देखो पुलिस की बड़ी थोड़ी सी दिक्कत है। आप भी समझ रहे हो, थोड़ा हंस रहे होंगे, बट आप भी समझ रहे हो, क्योंकि पुलिस के पास इतना काम है यहाँ पे। तो अभी क्या है, अब इसमें काउंसलिंग की जरूरत है। देखिए मैम, इसमें काउंसलिंग जरूरत है। अब जो बच्चा वैसा है, ठीक है, वो समझ में आ गया, अगर क्राइम हुआ मैम तो हम लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है मैम। अब रही बच्चे काउंसलिंग की बात, क्योंकि मैम इतना हम लोग के पास वो होता है कि हम लोग क्राइम पे ही काम करते हैं। काउंसलिंग तब करते हैं जब हम एक FIR लिख लेते हैं, मुझे लगता है बच्चा अब कोई ऐसी हरकत ना कर दे, तब हम उसकी काउंसलिंग करना शुरू करते हैं। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, क्या है ना, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का मैंने FIR लिखा, और उस बच्चे ने जाके 2 दिन बाद सुसाइड कर लिया, सोचिए, और उसको कोई चीज नहीं मिली, उसने सुसाइड बिल्कुल कर लिया, सही है, तो क्या काउंसलिंग इज होगा? रिक्वायर्ड। जो अब सुनिए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? व्हाट? या तो आप बच्चे को तक काउंसलिंग कर लेते, या उसको समझा लेते, नहीं बेटा आज नहीं, 4 दिन बाद इसको मैं कर दूंगा। आप उसको काउंसलिंग नहीं कर पाए। दूसरा, आपने काम किया। अच्छा, हमारे यहाँ मैम पुलिस में कुछ चीजें बहुत लेट होती हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे, अपने इंस्टाग्राम को मैंने मेल किया, अब वो आने में कम से कम 10 दिन लगता है, 1 हफ्ते का टाइम होता है। वैसे तो है 48 आवर का। अगर कोई हीनियस क्राइम है तो हम लोग लिख के भेजते हैं कि बहुत हीनियस है, इसमें बच्चा मर सकता है, तो वो 48 आवर के अंदर मुझे दे देते हैं। बट कुछ कुछ क्राइम ऐसे हैं मैम, वो 6 दिन 7 दिन बाद देते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा, जब बच्चे, अच्छा क्या होता है आजकल बच्चे मैम, क्या है ना, वो ये चाहते हैं तुरंत मुझे मिल जाए, मैंने FIR लिखाई, मुझे कल तक पता लग जाए। मैंने आपने कहा ना, पहले और अब में क्या अंतर है मैम? अब ये भी अंतर, आप यही बात आगे हम इस चीज को बता रहे हैं मैम। पहले अब में क्या अंतर है मैम? पहले क्या था, हम लोग जाके फिजिकली खेलते थे, मोबाइल नहीं जानते थे, कोई ऐसा चीज नहीं था। और अगर पापा नहीं आए हैं तो बैठे हुए हैं दिन भर पूरा, जब तक पापा आएंगे साइकिल लेके जाएंगे तभी जाएंगे। आप बात समझ रहे हो ना? तो पेशेंस डेवलप होता था मैम उस टाइम। अभी क्या हाँ, है, हर चीज, बिल्कुल सही हर है, चीज, है ना मैम? इम्पल्सिटी है हर चीज यस। में, इम्पल्सिव अभी क्या है बिहेवियर, मैम, अब आप तुरंत पिता, चाहिए। पापा ने कहा बेटा मोबाइल चाहिए, बच्चा रोने लगा, अरे यार कहीं बच्चा कुछ करना ले यार, फटाफट मोबाइल ला के दे दो। तो उसको हर चीज इजिली मिल जा रही है। तो ये चीजों की पेशेंस की कमी आ गई मैम, ये चीज कहना चाहता बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और ऑल्सो मुझे आपको आपकी बात देखकर ये भी लगा कि अगर आपके बच्चे का इंस्टा अकाउंट है तो एक पेरेंट का भी होना चाहिए, सो दैट हूँ। यस, एंड द पेरेंट शुड बी फॉलोइंग द चाइल्ड इंस्टा अकाउंट और वॉट एवर सोशल मीडिया अकाउंट इज हैविंग, ताकि वो बिल्कुल। बच्चा क्या कमेंट डाल रहा है, दे शुड कीप एन आई ऑन देखिए इट। मैम, आजकल आजकल स्क्रीन मैम, मैम आजकल स्क्रीन टाइम आता है, आज क्या इतनी इतनी चीजें सुविधाएं, पेरेंटल कंट्रोल आ रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं मैम। आज तो कितनी बिल्कुल सही है, मतलब बात है। अब तो मैम गूगल तो ऐसा चीज हो गया कि आपको कोई चीज छुपी नहीं है, आप कुछ भी मांगो मिल जाएगा, और लोग तैयार भी कर एवरीथिंग रहे हैं। इज अवेलेबल, तो बिल्कुल सही मिस यादव। आप कुछ नहीं करो, स्क्रीन टाइम लगा दो, अब देखो बच्चा क्या। अच्छा क्या मैम, थोड़ी बात है, क्या हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को नहीं चेक करते, जानते क्या? अब थोड़ा सावर वाली बात है। अब जैसे मान लीजिए हम दिन भर बाहर हैं, हम पेरेंट्स से बाहर हैं, चलिए हम पुलिस में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बाहर हैं, शाम को पहुंचे बच्चा क्या कर रहा है, तो कुछ करना नहीं है, बच्चे का लॉक, लॉक उसको तो भाई भाई लॉक खोलने खोला है, दिमाग में रख बैठा दो भाई, लॉक तो मैं चेक करूंगी। आप खोलो चुपचाप, एक उसका जो गूगल पे जो उसका 3 डॉट होते हैं ना, जो कि गूगल जी, हिस्ट्री, आप उसको क्रोम उसे क्रोम में देखिए। जाके उसको चेक करिए।
उसको चेक करके वो एक जगह डिलीट होगा, दोबारा फिर दूसरी जगह पे। जब आप वहाँ सेटिंग में जाएंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है, चलिए एक जगह डिलीट मार देगा, लेकिन अगला वो कहीं नहीं डिलीट होगा, वो डिलीट नहीं कर सकता। हम लोग जो पुलिस में काम करते हैं, तो हम लोग जो किसी अपराधी के बारे में काम करते हैं, तो उसको होता है बहुत होशियार है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लोग बाद में जाके उसको चेक करते हैं। तो कभी भी हम आप, हाँ, जब भी आता उसको 3 डॉट चेक करिए कि ये बच्चा मेरा दिन में साइड में सर्च क्या किया, क्या देख रहा था, क्या सर्च बिल्कुल किया। सही। वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स का विजिलेंट होना, ये बताना नहीं सुपरविजन बच्चे होना को नहीं बताना बहुत कि हम क्या कर इंपॉर्टेंट। रहे हैं, बट सर्च करिए और सर्च करके देख लीजिए बच्चा कुछ और मूवी देख रहा है या कुछ और देख रहा है, तो उसको उसी हिसाब से डील करना शुरू कर दीजिए आगे। आपको बोलना नहीं है, आप एब्सोल्यूट, बोल रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा वो। हाँ तो बिल्कुल सही है। आपको, व्हाई आर दे कीपिंग आई ऑन मी, बिल्कुल यस, सही है। यस, आपकी बात बिल्कुल सही क्योंकि है। आपको 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 अगली बार वो अपना पासवर्ड नहीं देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आप बहुत से पेरेंट्स ऐसे हो गए जो पासवर्ड देते बच्चे देते नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, बच्चों से पासवर्ड निकलवाना मीन्स बैंक से बहुत पैसा बड़ी बात है, निकलवाना। बहुत बहुत बड़ी बात है। So, moving on to Dr. Bhalla. Dr. Bhalla, we are seeing that adolescents don't open up most of the time. So, what are the barriers that prevent adolescents from seeking help for either substance abuse or cyberbullying or both? One of the main barriers, what I feel is that the shame attached to it, you know, and second is the um, the fear of a punishment. That's why what Ms. Rita Yadav was saying is correct, that the parents should interact more. You know, that the fear and the shame, these are two factors. Either there is a shame if they come to know what I'm doing, you know, what my friend circle or my parents or my relatives or the society will say or my teachers will say. And second is the fear. These are the two main causes. There are multiple causes, but these are the two, I think, the fundamental cause. So, Bilkul, absolutely. And yeah, they feel that we are being judged. yeah, But they always feel that whatever we are saying, we are being judged. yeah. Because the moment child says ki something like something which is not conventional has happened, first of all, first response of the parent is tumne aisa kyun kiya? So they are Yeah. being judged, and that's why they most of the time don't open up also. Yes. And so it is a common saying that when you know yourself, you are empowered. And when you accept yourself, you are invincible. So here, making teen and understand, making parent understand is the key to deal with all these situations. Also, Dr. Bhalla, I would like to ask from you only, how can unresolved cybercrime push a child towards uh, substance use? Is there a connection? Excellent question. Excellent question. Definitely there's a connection. Definitely there's a connection. What a child, when it goes for a cyber bully or abuse, you know, he or she is trying to take out some frustration somewhere. That is the reason. He or she is trying to take out some sort of frustration, you know. So it's a emotional imbalance. Only then person goes for it. And this emotional imbalance is the root cause of all sort of substance abuse. So basically, it roots Interlink. down Yeah, to the growing yeah. brain. See, the growing brain is emotionally imbalanced. You know? Got your point. Got your point, Dr. Bhalla. Now we are left with little time because there are certain queries, questions in the chat box, which we are going to take soon. So there are 2-3 more questions which I'm going to ask. And I request experts to give the answer in one liner or two liner. So Dr. Gandhi, what are the current resources and support system available to adolescents who are facing these challenges with substance abuse? The number one, which I feel every school and college, when the session start, they should have a program on the substance abuse. Like when I conduct the program, we were running a
campaign called Healthy Campus, and still the website is there, www.healthycampus.in. It's a 7-pointer program. We say कि अगर student ऐसा करेंगे, then they will not be going to the drug. Rather simply saying कि you don't consume cigarette, alcohol, or any kind of the drug, you say you do these things. So the first part, we tell the story about the cigarette, for example. हम लोगों ने देखा है जब भी टैबेको का कोई भी खेत है तो वहाँ कोई भी फेंसिंग नहीं होती, तो स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं फेंसिंग होती। विषय कि ना वहाँ पे कोई गाय आती है ना कोई बकरी आती है, कोई भी जानवर टैबेको नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? Because they know tobacco kills. It's only human being those who do this. So this is the on the lighter part, but second part is as far as the resources are concerned, Narcotics Control Bureau of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, then UNODC, DEA, lots of organizations are working in this direction. Even every year, 26 June, they celebrate, they observe International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. And every time they have a different theme, like the listen first. We were talking about the parents. So parents should listen. They must listen what the child is saying, because he has to vent out. अगर पेरेंट्स नहीं सुनेंगे, स्कूल में टीचर नहीं सुनेगा, साथी नहीं सुनेगा, तो उसके पास में रास्ता क्या है? He will be going to the drugs. And then getting information from these sites, different sites, that may not be the correct one or may not be age appropriate. Right. So, Dr. Gandhi, how can we educate adolescents about healthy coping mechanism for stress and emotional distress that they do not involve in substance abuse or cyberbullying? When you said this is a positive feedback mechanism, right? Instead of saying you don't do, here you said, if you do this, rather a positive feedback system, 7-point program, as you said. Very rightly you have said, and then definitely involving them into yoga, meditation, all these things, and definitely give a social consciousness. We tell the students social consciousness related activities. When we give back to the society, we get the satisfaction, like our brain get the serotonin. When we are running and doing some exercise, we are getting endorphin. When we are achieving something in the life, we are getting dopamine. When we are supporting somebody and somebody is hugging us, कोई बात नहीं बेटा, अगर इस बार तेरे marks कम आए, अगली बार work करेंगे. They get the oxytocin. So these are the multiple things. A child, when he gets all these hormones in a natural way, why he would be going to the drugs? और सबसे बड़ा पार्ट ये है कि हमारे पास बड़ा सिंपल डायलॉग रहता है, आप शैतान को अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो जिन की तरह से बता मेरे आका मैं क्या करूं। तो आपको उसे इन्वॉल्व रखना है पॉजिटिव चीजों में, आपको उसका टाइम टेबल बनाना है, उसको मॉनिटर करना है, कुछ वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज करानी है, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड कुछ एक्टिविटी करानी है, उसको रियलाइज करवाना है। सेल्फ स्टीम उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम लोग बच्चे को बोलते हैं यार तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो ऐसा लगता है। नो, हमें अपने चाइल्ड को कभी भी उसकी सेल्फ स्टीम को डाउन नहीं होने देना होता है। There was a case in IIT, one of the IIT, where one of the child पानी की टंकी से नीचे कूद गया, उसको बोला गया था तेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता है। So as a parents, as a teacher, we should always remember, we should give the top value to our kids. उसको ये बताना है you are the most beautiful, you are capable, you can do everything. अभी अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, don't worry, it will happen. तो बच्चा आपके साथ शेयर करेगा। स्क्रीन टाइम जैसे बोला गया, स्क्रीन टाइम का हम सबको हिसाब किताब रखना चाहिए। वी शुड गिव आवर ओन एग्जांपल। लॉक के बारे में शेयरिंग होना चाहिए कि भाई तू मेरे मोबाइल का भी लॉक वो पासवर्ड ले ले, अपना भी दे दो। एंड मैडम ऑल्सो टोल्ड कि गूगल इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ की आप देख सकते हो कि उसने कहाँ कहाँ वेबसाइट्स को विजिट किया है। सो आई एम श्योर बच्चों को हम लोग काफी हद तक रोक सकते हैं। और अगर बच्चा चला भी गया तो उसको छुपाने का जरूरत नहीं है, काउंसलर्स के पास जाना चाहिए, डी एडिक्शन के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दें, डांटना शुरू कर दें, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दिस एरिया ना, वी शुड गो टू द एक्सपर्ट। एंड आई एम श्योर बिल्कुल, absolutely, Dr. Gandhi, what you have said is very right. This is the time when they need expert help, and the parents need to understand that their child parents as well as their teens, they both of them require the need of the expert.
one-liner answer I want from you, Miss Rita, that are there any platforms or apps where cyberbullying is very common? And what are the current legal and policy framework? I mean, if somebody is having these issues, or somebody has noticed, okay, this is a cyberbullying has happened. So, I mean, do they have to go to police station or what, like any other platform online where they can put this request? यस, देखिए मैम, साइबर बुलिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना मैम, जैसे आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आपका आजकल स्नैपचैट है, पहले टिकटॉक आता था, इस टाइप छोटे छोटे बहुत से ढेर सारे प्लेटफॉर्म है, इस पे तो आपका साइबर बुलिंग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब मैसेज के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। अब रही बात, आपने कहा कि इसको हम कैसे जस्टिफाई करें, कैसे क्या करें इस चीज को। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, कोई करंट लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क है टू हाँ, एड्रेस साइबर बुलिंग? यस है, एक लाइन में है, मिस है, यादव आप है। बता दें, क्योंकि वी आप विल टेक उसके लिए क्वेश्चंस। cybercrime.gov.in पर आप जाके एक आप कंप्लेंट कर दीजिए ऑनलाइन। वो ऑनलाइन कंप्लेंट सीधा आपके संबंधित थाने में जाएगी। थाने से जो भी व्यक्ति होगा, वो आईओ आपका वो कंप्लेंट की एज वगैरह सब लिखा होता है, पीड़ित का, विक्टिम का या बच्चे का, पेरेंट्स कर रहे हैं तो विक्टिम का, बच्चे का, तो उस हिसाब से आपके पास आके बात करके पूरी बात कर लेंगे और बच्चे का काउंसलिंग भी कर लेते हैं हम। Okay, thank you. Thank you, experts. You have given insight of this whole subject, and I'm sure that everybody would have got benefited with your expert advices and insight into the subject. Now we have a parent coach and an adolescent expert with us, Dr. Ritu Gupta. Dr. Ritu Gupta, till now we have been discussing these issues. I mean, about the cyberbullying and about the substance abuse issues, how to solve with them, and what are different these kind of activities happening. As a parent coach, I want to ask you that what practical steps can parent take to prevent such situation, and how do you talk to children regarding, or rather, how do you say, instead I should say, how should the parent talk to the children regarding these difficult topics without making any judgment? What should be the way? Yeah. Thank you, Dr. Ruchira. And first of all, I must congratulate all the our experts here. So very wonderfully explained by Dr. Hariom, Dr. Munish, and Ms. Rita. So all the points very well explained. And Dr. Hariom, जो आपने end में बोला कि बच्चों को वो सारे hormones अगर मिल रहे होंगे तो उसको जरूरत नहीं होगी कहीं भी कुछ और जाकर एक्वायर करने की या सब्सटेंसेस की तरफ जाने की या ऑनलाइन अपना एक मीडियम ढूंढने की. And as parents, what we can do is, and I feel the most important and the most critical way to prevent our children from either being bullied or finding solace online or going to substances to get gratification or to just forget everything is like parenting. So that's the connection with parents. So जो बच्चों और parents के बीच का जो connection है वो सबसे बड़ा preventive factor है. अगर उन दोनों के parents के और बच्चों के bonds strong होंगे, उनके बीच का connection strong होगा, that will go a long way. That will be a preventive factor, and we need to start early. It's not कि बच्चा आपका 18 साल का हो गया है. It's never too late on one hand, but I would say start early. जैसे अगर हमें कुछ parental controls भी रखने हैं या हमें उनके ऊपर एक vigilance जो डॉक्टर रुचिरा ने कहा वो रखना है, so we need to form those boundaries and limits early. सारा schedule है या house rules हैं, आपको ओपन स्पेसेस में ही लैपटॉप या मोबाइल यूज करना है. किसी ने उसमें डाला है कि स्मार्टफोन्स, like we should not give smartphones to our children early. We should postpone giving smartphones to them as
like late as possible. जितना हम डिले कर सकते हैं उतना करें. एंड एज आई सेड, सी हम सोचते हैं कि शायद आजकल की जनरेशन कुछ अलग है, बच्चे अलग हैं, बट किड्स आर द सेम जो वो 10 साल पहले थे या 20 साल पहले थे. ओनली द एनवायरमेंट हैज चेंज्ड. So there's so much of exposure to our children which we cannot prevent, which we cannot stop. So what we need is, as a protective mechanism, we need to be connected to them. We need to have open communication with them. We need to listen to them actively. जब अगर सोचिए कि अगर आपको सपोज करिए जैसे ई सिगरेट्स, वेपिंग, इट्स रैम्पेंट, स्पेशली इन मेट्रोज. छोटे छोटे बच्चे, 5th क्लास के बच्चे, पेरेंट्स आर कमिंग एंड सेइंग हमें आज अपने स्कूल, बच्चों के स्कूल के बैग में हमें कुछ वो वेप मिला, एंड देन दे हैव लर्न वेपिंग, इट्स सो रैम्पेंट. एंड देन हाउ दे डील इज, एक थप्पड़ लगा दिया या डांट लगा दी या खबरदार आगे से ऐसे किया. बट दैट डजंट वर्क. अगर आपको मिला है, सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर सेल्फ, योर ओन रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट. और फिर आप बच्चे के साथ डील करिए, फिर उसको बिठाइए और पूछिए बेटा क्या चल रहा है. So without any judgment, without scolding, without telling them do this, don't do this, why did you do this, or ridiculing them, अगर आप ऐसा करेंगे बच्चा दोबारा आपसे कुछ शेयर नहीं करेगा या आपके पास आएगा ही नहीं और छुप कर करेगा. They'll become, they are very smart. So they are very smart and they can hide things. You'll never even, never be able to come to know about it. So children are coming, porn देख रहे हैं, वेपिंग कर रहे हैं, risky behaviors हैं, they are dating and they are having those, just sexual interactions, very casual sexual interactions. All this can be prevented if parents are deeply connected with their children. The lines of communication are open both ways. They listen to their child, they understand their child, they understand from their world, they understand that their brain is not mature enough, though they have grown up. बाहर से बहुत लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत आजकल इनको सब कुछ पता है, स्मार्ट है, बट कहीं ना कहीं वो बच्चे इमोशनली इमेच्योर हैं, इमोशनली डिसरेगुलेटेड है, एंड वी नीड टू बिल्ड देयर इमोशनल इंटेलिजेंस, being emotionally intelligent ourselves as parents. So first we need to emotionally regulate ourselves and then help our children emotionally regulate them, and we need to guide them and be a role model ourselves. So वो बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, वो आपको देख रहे हैं हर घड़ी, हर मिनट, and they'll do what they see you doing. So we need to be very careful. बहुत सारी चीजें कवर अप हुई हैं. एक चीज मैम कहना चाहते हैं, छोटी सी बात, बस 2 लाइन में. जी जी. मेरे यहाँ एक जौनपुर है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक स्कूल है. वहाँ पे पता बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं ना, वहाँ पे उन्होंने एक काउंसलर रखा हुआ है. वहाँ पे जो पढ़ाते हैं तो काउंसलर रखा. वो क्या करते हैं कि वो बच्चों को साइबर के बारे में, बड़ा अच्छा लगा मुझे, हम गए थे वहां पर, वो साइबर के बारे में फोटो डाल के दिखा के बताते, बेटा ये क्राइम है, अगर आप ऐसे करोगे तो आगे जाके आपका भविष्य खराब होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी. तो वो धीरे 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 उनकी बातों को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं. तो मेरा कहना यह है कि अगर सभी स्कूलों में एक ऐसा क्लास चले छोटे बच्चों के लिए, तो वो धीरे धीरे ग्रोन अप होते चले जाएंगे. वेरी राइट. तो हमें बहुत अर्ली स्टार्ट करना है, बच्चों को एजुकेट करना है, अवेयर करना है. जैसे स्कूल्स में जाकर बताना है कि अभी ये जब छोटी एज में स्टार्ट करते हैं तो उनको वो डोपामीन किक मिलता है, और वो फर्स्ट टाइम अगर नो नहीं बोलते हैं, फर्स्ट टाइम लाइक जो भी एडिक्ट्स बने, जो भी उस पर डिपेंडेंट हो गए, उन्होंने कभी पहली बारी किया उसको एक्सपेरिमेंट. सो इवन एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है, नो बोलना है. और हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, चाहे कोई मूवी हो, चाहे कोई स्टोरी हो, चाहे हम बैठकर कुछ न्यूज में पढ़ रहे हैं. We should use every opportunity to as in like educational opportunity to educate them, to make them aware about all the pros and cons with our children. So these are some points, Dr. Ruchira and everybody. And absolutely, very rightly said, Dr. Ritu. These are very, very important points where we should definitely focus. And as Ms. Yadav said, that school, that early they should be taught about these things like about cyberbullying and substance abuse. In fact, one of our viewer, Dr. R.S. Bajaj sir, has said
that school, actually it's his question, should the school restrict the usage of online tutoring and sending text lesson online? And one of the viewer has said that there should be a chapter on cyberbullying and substance abuse right from the beginning. They should be hammered every time. Every time the level can be different as per age appropriate. So this is very important. You also tell them Um, about digital footprints कि एक बार ही आपने कुछ कर दिया तो वो हमेशा that cannot be deleted. cannot be deleted. Absolutely. And साइबर में यही अच्छा फुटप्रिंट छोड़ के ही जाता है, आदि बचता नहीं है। बिल्कुल, these are very important thing कि एक बार हो गया, the kids need to be told कि whatever you are doing on net, it is there, it will always remain there. You can delete from your history but cannot delete from this digital footprint. It will be there. So now we are coming to end of this talk show. To summarize, I will say that a decade ago, social media platforms were less dominant and less integrated into everyday's life. Today's teens are constantly connected through smartphones, exposed to a 24/7 stream of content, peer comparison, and potential cyberbullying. The digital immersion shapes their identity, relationships, and self-worth in ways previous generations did not experience. So this is a difference. While there is more awareness and openness about mental health today, despite that, these issues are there. Rates of anxiety, depression, and stress among teens have also risen. Social pressures, academic expectations, digital overload contribute to this trend in ways that were less intense a decade ago. Although traditional substance use like cigarettes, that has declined, but newer trends like vaping, cannabis edibles, misuse of prescription drugs have become more common. These changes pose new health risks and are harder for parents and educators to detect. Teens today have instant access to vast amount of information, which can be empowering, but also overwhelming. While they may be more informed about global issues, they are also simultaneously, they are also exposed to misinformations and harmful content more easily than before. There are also issues related to gender identity, inclusivity, and diversity, which is quite prominent today. And I feel that parenting teen today involves navigating technology boundaries, online safeties, and emotional well-being in a much more complex environment than it was earlier. This generational gap in digital literacy can also create challenges in communication and understanding. So I feel that understanding these emotional triggers is essential for prevention and support efforts. Helping adolescents develop emotional regulation, self-awareness, and strong support systems can significantly reduce their engagement in risky behaviors. I would like to end up by saying that when you know yourself, you are empowered. When you accept yourself, you are invincible. This is my favorite. This is the quote which I like the most. With this, I would like to thank you all, the experts, the whole experts, and the team UP AHA, and I will hand over this platform to the MC, Ms. Dr. Ritu Jain. Thank you so much, ma'am. Many, many congratulations, ma'am. This was a very wonderful session, very well conceptualized and executed, and an eye-opener for many. And many real concerns have been brought up and very well addressed by all the esteemed panelists. So a big thank you to our guests tonight, all of them, Dr. Hariom Gandhi, Dr. Monish Bhalla,
Rita Yadav ji, and of course our secretary, Dr. Ritu Gupta. Thank you so much, everyone. I would like some inputs from Dr. Rimjim, our guest of honor for tonight. Yeah. Would you have some? Thank you, Dr. Ritu. Wonderful, wonderful talk show. And I'm sure all the parents who are there, who are parents of teenagers or younger children, they must have been benefited. One thing I would like to comment, as ma'am said, that misinformation is one thing which is leading to all these things. So if we start early, if we start training them early, right from beginning, about cyberbullying or substance abuse, even for screen time and use of social media, maybe that can have some effect. Because as we have realized that with the social media use and use of junk food, you cannot take away these things from their lives, because it is there, they are going to use all these things. So why not inform them properly? Why not inform them about the side effects of all these things? We can have posters in the school, we can have chapters in the school, we can have easy availability to the complaints. Like as somebody said, that everybody knows about that the child is using substance, but the parents don't know. So who is going to complain? And if the child is being cyberbullied for some reason, he is not going to complain. Most of the children will not go to their parents. If the parents are not supportive, they are not going to go to their parents. So they should have some number in the school, or some like the Miss Yadav said, that there's a website also where they can complain. So if there is a number where they can anonymously call, and that can be of some help, and maybe we can help that child. As they said that somebody was about to do suicide, so we can prevent some of these cases. So that was a wonderful talk. And I think the adolescent chapter, central adolescent chapter, should like recommend to the government that we can have some these kind of programs, regular programs in the schools, so that we can prevent at least some of the cases we will be able to prevent. Wonderful, wonderful. Kudos to all the speakers and experts and the organizers. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Dr. Ritu, can you give me a Absolutely. I mean, just the last word I want to say here, that Indian Academy of Pediatrics, under the presidential action plan of Dr. Upendra Kinjavatekar sir, we started a program called Sankalp Sampurna Swasthya. And that program was so good, actually. And Dr. Shalini Madam was part of it. That program had all these components. So IAP is doing its bit of role, whatever IAP should do about spreading awareness. So there was this role modeling. As somebody said, as Dr. Ritu said, somebody is saying that, okay, first time, will you try? They should learn to say no. So all these, when to say no, when to say yes, all these bullying, being bullying or bullying somebody. So all very beautiful. This Sankalp Sampurna Swasthya module was made. Maharashtra government has already taken it into a regular for the school program. And I'm sure further government should take it further. It's a very beautiful program dealing with all these issues also. Thank you. In the end, I would like to thank all the dignitaries of Central IP and Central AHA for joining us and helping us in making this success. Thank you so much, all the participants, for joining in. Thank you so much. Thank you, Dr. Ritu. And I just want to give one closing line for all the parents who are present here. So always remember that, all those children who take to like finding solace online, or who take to substance abuse, consider their self-esteem is low. They have a negative self-talk. They don't think high about themselves. They don't feel heard, seen, understood. So as parents, keep like their cup full, raise their self-esteem, let them know that they are unique, they are the best, and they don't need to compare themselves with anybody. If their cup of self-esteem is full, they will not like go away from their parents, or try to just get lost in any of these things. Yeah, that is what Beautifully said. Thank you. So that brings us end
to the end of this session. Thank you so much, everyone, and a very good night. Good night. Thank you. Thanks, everyone. Thank you, Dr. Hariom. Thank Dr. you. Thank